Okay, my dear student of class 10th, how are you beta? I hope you all will be fine. From today we have going to complete and done the chapter number 8 where we have discussed the reproduction in organisms, and also we have discussed the mode of the reproduction, in which kinds of the reproduction taking place in organisms, and also understand the sexual and asexual reproduction. So before understand these concepts, we would understand the one concept, it is that what beta? Reproduction. What is the meaning of the reproduction? Now after complete the definition of the reproduction, we have done the sexual reproduction and asexual reproduction, at which kinds of the organism is taking place and come under the asexual reproduction, and which kinds of the organisms in come under the sexual reproductions. So without any wait, let's look. Chapter 8, Reproduction in Organism. Organism. So first of all we would understand what beta? What actually the reproduction. Reproduction. In reproduction you can write, reproduction is a process by which new individual organism offspring are reproduction is a process by which new individuals offspring are produced, offsprings are reproduce, ये प्रोड्यूस आएंगे, प्रोड्यूस फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रॉम देयर पेरेंट. What it is the meaning of that? So let's look. Reproduction is a process, वह प्रोसेस है by which new individual, मतलब अपने ही जैसे न्यू बच्चों को, न्यू संतानों को जन्म देने की जो कैपेबिलिटी है, वही प्रोसेस क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन कहलाती है. एक तरीके से आप समझ सकते हैं रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच, वह प्रोसेस के द्वारा बाय विच न्यू इंडिविजुअल, मतलब न्यू बच्चे, इंडिविजुअल, ऑफस्प्रिंग मीन्स बच्चा, आर प्रोड्यूस कैसे प्रोड्यूस होंगे? आएंगे फ्रॉम देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के थ्रू. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज reproduction. Now second heading we have the type of reproduction. Okay, so in the type of reproduction we have discussed two different kinds of the reproduction. This is the table. First reproduction we have take sexual reproduction, and another column we have write what beta? Asexual reproduction. Asexual reproduction. Okay, now in sexual reproduction what we have write? In sexual reproduction an organisms can reproduce without an organism, you can write an organisms can reproduce reproduced with the involvement of two individuals, involvement of two individual. Okay, what actually the meaning of that? एक ऐसा
रिप्रोडक्शन जिसमें न्यू बच्चों को आने के लिए या ऑफस्प्रिंग्स को आने के लिए, न्यू इंडिविजुअल को आने के लिए, फॉर द कमिंग ऑफ द न्यू इंडिविजुअल वी वुड नीड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ द इंडिविजुअल सच एज, यदि हम ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले लें तो मेल और फीमेल दोनों का रहना बहुत ज़रूरी, इट इज़ वेरी कंपलसरी फॉर बोथ, फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। उन दोनों का वेरी इंपॉर्टेंट रोल है न्यू इंडिविजुअल के क्रिएशन पे। सो इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल बोथ आर 50-50% of the responsible for the new generation or new individuals. Now take an example beta, all kinds of the mammalia, most organism which are come under the mammalia group, it's only those organisms show what beta, sexual reproduction, and human being as well, मतलब कि इंसानों में भी these kinds of the mode of sexual reproduction is occurring और पाई जाती है। कौन सा? sexual reproduction. Now take another examples here and we would go and understand the asexual reproduction, what it is the meaning and which kinds of the reproduction come under it. So let's look. In asexual reproduction you can write an organisms can reproduce without involvement of another organism. What is the meaning of that? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म तो आते हैं लेकिन उसमें दोनों कैटेगरी यानी कि मेल और फीमेल यानी कि मदर और फादर दोनों की ज़रूरत नहीं है। यदि न्यू इंडिविजुअल आते हैं, न्यू बच्चे आते हैं तो उसके लिए केवल एक ही रिस्पॉन्सिबल है, एक ही इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है फॉर द जनरेशन, फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल इन द asexual reproductions. In sexual reproduction what is the difference from the asexual reproduction beta? Here two category or two sexes are there, male and female, both are 50-50% responsible for the creation of new individual in the world.